morning, Savigo. Myself, Avik Roy from the mathematicsicon channel, your mathematics teacher. Okay, so in this lecture, we are going to cover rate of measure chapter from the application of differentiation. Okay, and this lecture is very important for the board standard as well as for the enter standard. That means both the candidates you should follow these lectures as well, just for the better experiencing and for getting the marks and for getting the knowledge from this chapter and from these lectures as well. Okay, so this lecture is very important and very exclusive also, so you should view this lecture properly with proper attention and very religiously also, so that you may face the various kinds of questions which may arise and which may come in your future exams, whatever the exams it is. Just this type of questions are very important for the better experiencing. Okay, now the last in the last video, I think we had solved different types of questions for the board standard, and for JEE main and advanced standard we had solved various questions from this chapter. So it is continuing. Okay, so this thing, since this 4 or 5 lectures, actually this chapter is going on, and this various kinds of discussions were there. Just you can see the previous lectures, then I think from the previous lecture you could get the idea about this chapter and about the solutions process as well. Okay, so this chapter is very related with this practical works and this with your daily activities as well. So I think if you have the daily activity, if you have the clear concept, if you have the consciousness about your daily activities, then I think this chapter will be the most interesting chapter of your life. So I think this you should solve this type of questions from this chapter, and I think it will be better for your future as well. Okay, just if you are just thinking that you will get the you will take admission in engineering studies, and I think this type of questions are very important for the civil engineering, for the electrical engineering, various types of engineerings. So are supposed to be used in your practical works in your workplace also. Okay, so if you have the knowledge, if you have the clear concept regarding this type of questions, then I think it will be helpful and it will be useful for shining your life and for getting the aim or goal whatever is set in your mind. Okay, so just write the first question. Water is dripping from a conical funnel. Okay, water is dripping from a conical funnel. Water is dripping from a conical funnel of semi-vertical angle angle pi by 4 at the uniform rate 2 centimeters square per second in its surface area. Okay, through a tiny hole, through a tiny hole at the vertex in the bottom. Okay, at the vertex in the bottom. When the slant height of the water is 4 centimeter, when the slant height of the water is 4 centimeter, find the rate of decrease of the slant height of the water. Okay, find the rate of decrease of slant height. Okay, so here water is poured into a conical funnel. The question is,
the water is poured into a conical funnel. Okay, but unfortunately there is a tiny hole in the bottom of this conical funnel, and that's why water is dripping out. That means पानी निकल रहा है नीचे से, ठीक है? So that means the quantity of the water will be decreased. Okay, so if the quantity of the water will be decreased, then I think the volume of this water quantity will be decreased, and the surface area which is covered by this water quantity, that will be decreased also. Am I right or not? Just draw a figure. This is the inverted cone, that means conical funnel. Okay, here some water is poured, and here I think a tiny hole is there, and that's why water is dripping out. That means पानी निकल रहा है कि नहीं? So this is the surface of this water level, and this is the base radius, and this is the height. Okay, so I think this water surface is looking like a circle, and the whole surface area of this water quantity which is covered in this conical funnel, that will be in the shape of cone, because this is the cone type container. Okay, so the surface area, just you can see water is dripping out from a conical funnel with the angle, semi-vertical angle is pi by 4. That means this angle is pi by 4. Okay, at the rate of 2 centimeter square per second in its surface area. That means the surface area of this water is decreasing at the rate of 2 centimeter square per second. So how could I know that this rate is for the surface area? Because the centimeter square, the power is square. That means whenever this square power will be used, that means this rate is for the area. When the power will be cube, then it will be the rate of the volume as well. Just remember this thing. Okay, 2 centimeter square per second. It is the decreasing rate because water is dripping out. That's why the quantity of the water will be decreased. So that means the quantity of this water will be decreased more. Then I think the quantity of the water, then I think the surface area which is covered by this water quantity will be decreased more. Okay, so यहाँ पर जो पानी का जो क्वांटिटी है वो कम होता रहेगा, उसके साथ साथ पानी जो सरफेस जो एरिया यहाँ पर ये कवर करके रखा है वो पानी वो सरफेस एरिया भी कम होता रहेगा. इसका क्वांटिटी आपको दिया गया है. ठीक है, सो जस्ट राइट हियर इट इज द बेस रेडियस r, it is your h, and it is your slant height, that means L. Okay, just right. Let base radius equals to r centimeter, height is h centimeter, slant height is L centimeter. We know that from the conical concept. Okay, I think this part is the right angle triangle. Okay, so from this part, can I write this line? Hypotenuse square equals to base square plus height square. Hypotenuse means L, base means R, and height is H. Whatever it is, just we can write this identity, and it will be your equation number 1. Okay, now the surface area decreasing rate is given. Surface area decreasing rate is given. Just write this line. Given surface area. If we denote the surface area as S, then I think what is given here? Surface area is decreasing. 2 centimeter square per second. Time is given. Time with respect to time. Actually the surface area is decreasing. Surface area is decreasing. That means what? Surface area is changing. Changing means ds with respect to time. That means time is changing. That's why the surface area is changing. ds by dt equals to 2 centimeter square per second. Now you tell me, should I use this minus sign with this 2? Decreasing rate it is. Just remember this thing. The water quantity is decreasing. That's why surface area is decreasing. That means this 2 centimeter square per second is the decreasing rate. So decreasing rate means minus sign should be used. So that means ds by dt equals to minus 2 centimeter square per second. Okay. Now here actually what should I find here? Just you can see. Tiny hole at the vertex of the bottom. When the slant height of the water is 4 centimeter,
then find the rate of decrease of slant height. That means water quantity या फिर surface area जितना कम होगा, ये slant height भी कम होता रहेगा, ठीक है? तो उसका ही रेट आपको निकालना है. That means आपको निकालना क्या है? dl by dt निकालना है. dl by dt निकालना है. ऐसे लिख कर रखो, dl by dt क्वेश्चन मार्क. dl by dt आपको निकालना है. That means जैसे लिखो, we know that the surface area of cone, we know that the surface area of cone, we know that surface area of cone S equals to surface area. That means यहां पर देखो, total surface area, two type surface areas are there. Carved surface area, total surface area. Okay, so here I think, which one should I use here? Total surface area or carved surface area? Here water quantity is decreasing. Okay, so I think this upper portion, that means the water surface, are not being used here. Okay, so that means the area which is covered in this container by this water quantity, I think that will depends on this slant portion. This portion I think it is not used here. Okay, so पानी जितना यहाँ पर कंटेनर में पानी जितना भी पोर करके रखा गया है, वो सिर्फ इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है. इसका एरिया तो क्यों कवर करें, इसका एरिया हम लोग क्यों ले यहाँ पर, है जरूरत नहीं है. यहाँ पर सिर्फ कार्व सरफेस एरिया लेने से ही हो जाता है, और वो भी स्लैंट हाइट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कार्व सरफेस एरिया लेने से ही ज्यादा यूजफुल होगा. आई थिंक यहाँ पर सरफेस एरिया बोला गया, कार्व या फिर टोटल ये नहीं बोला गया है. तो यहाँ पर एक काम करो, कार्व सरफेस लिखो, कार्व सरफेस S इक्वल्स टू पाई आर एल. दिस इज द फॉर्मूला, पाई आर एल. So L is slant height now. So pi L, and here according to this question the slant height will have to be used. Slant height will have to be found in the last part of this question. Okay, just every question, or that means everywhere this slant height related question it is. That means there is no R, there is no H. So how can I exclude this R and H from this part? We have a link. The link is given in the question, just numbering. Equation number 1. Now, semi-vertical angle. Semi-vertical angle is what? Pi by 4. Now, OAB. Okay. So this is the triangle name. So for triangle, for AOB, triangle AOB, just see, in this part, in this surface area part, this R is useless. That means this R term should be rearranged in the form of L, so that we can find dl by dt. Because if you want to find this dl by dt, then except L, no term is permissible to be here. That means कोई भी टर्म L के अलावा कोई भी टर्म इस एक्सप्रेशन में तो नहीं रह सकता है. ठीक है, सिर्फ L L L ही रहना चाहिए. तो यहां पर तो R एक दिखाई दे रहा है. दैट मींस ये R को तो मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा. कैसे भगाएंगे, उसके लिए क्वेश्चन में एक सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाई 4 दिया गया है. तो देखते हैं पाई बाई 4 यूज करके R और L के बीच कोई भी यहां पर इक्वेशन या फिर कोई भी रिलेशन यहां पर बना सकते हैं या नहीं. AOB triangle sin pi by 4, that means sin 45 degree equals to height by hypotenuse. Height means R, by hypotenuse means L. So that means 1 by root 2. So that means R by L. So यहां पर दिखाई दे रहा है R equals to root 2 by L, right? R equals to what? Root 2 by R equals to L by root 2. R equals to L by root 2. देखो, there is a relation between R and L. So that is wherever this R will be introduced, that can be replaced and that can be rearranged as the value of L, as the term of L, L by root 2. Now from 1.
Now from 1. From 1. S equals to pi into R. In place of R, what can I use? L by root 2 into L. That means S equals to pi by root 2 into L square. That's right. So I think according to this question, ds by dt is given and dl by dt needs to be found. So I think both sides with respect to t differentiation should have been chosen. ds by dt pi by root 2 and L square, that means ddt of L square. So pi by root 2 2L dl by dt. Okay. So ds by dt, I think minus 2 is given. Minus 2 cancel. Now if you calculate this thing, dl by dt. Okay. अच्छा, यहां पर क्या होगा dl by dt? Minus root 2 by pi L. Okay. So that means minus root 2 by pi into L. L का वैल्यू क्वेश्चन में शायद लास्ट पार्ट में दिया गया है. Okay. 4 centimeter. Just you can see when the slant height of this water level is 4 centimeter. So 4. तो ऐसे लिखना है dl by dt, ऐसे L equals to 4. बस यहाँ पर क्या होगा? Minus root 2 by 4 pi centimeter per second. It is the dl by dt. That means slant height is decreasing at the rate of minus root 2 by 4 pi centimeter per second. Here centimeter per second because L length is given. That means सेंटीमीटर के ऊपर तो पावर 1 ही रहेगा, है कि नहीं? एरिया हो तो पावर 2 रहेगा, वॉल्यूम हो तो पावर 3 रहेगा, है कि नहीं? ठीक है? ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन. Little bit actually this you have to be very much conscious about the daily activities. That means you should have the common sense, okay, regarding the daily activities, regarding these things. These are all practical examples, no? Okay. So now, an inverted cone has a depth of 10 centimeter. Okay, just write the question. An inverted cone, that means ulta cone. Okay, inverted means क्या? Ulta cone. ऐसे. Inverted cone has the depth of 10 centimeter. An inverted cone has the depth of an inverted cone has the depth of 10 centimeter. Okay, and a base radius 5 centimeter and a base radius 5 centimeter. Very good. A cone is there. The base radius is 5 and depth means height of this cone. Height is 10 centimeter. Okay. Water is poured into it. मतलब पानी डाला गया. Water is poured into it. मतलब इसके अंदर पानी डाला गया. ठीक है? Into it at the rate of 3/2 cc per minute. That means into it at the rate of 3/2 cc per minute. Cc means cubic centimeter, centimeter cube. Cc per minute. Find the rate at which the level of the water. Find the rate at which the water level is rising. Find the rate at which the water level is rising. Okay. When the depth is 4 centimeter. When the depth is 4 centimeter. That means एक inverted cone है आपके पास, ऐसे inverted cone, ठीक है? उसके अंदर आपने कुछ पानी डाला, तो एक पानी का लेयर यहाँ पर हो गया. तो ये होता है पानी का सरफेस, ठीक है? अच्छा, तो
जितना आप पानी डालेंगे उतना ही पानी का लेवल ऊपर आएगा। लेवल मीन्स क्या, ये बढ़ता रहेगा, है कि नहीं। लेवल मतलब क्या है, पानी का लेवल जितना बढ़ेगा उतना ही तो ये डेप्थ बढ़ेगा ना, है कि नहीं। दैट मीन्स एच बढ़ेगा, ठीक है। सो यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कोन का बेस रेडियस दिया गया है और हाइट भी दिया गया है। दैट मीन्स कोन का बेस रेडियस है, देखो यहां पर इन्वर्टेड कोन हैज द डेप्थ 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक है 10 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर, ओके। और ये तो सेमी वर्टिकल एंगल है ना, नहीं दिया गया है, थीटा ले लेते हैं, ठीक है। सो लेट देखते हैं, शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन रिगार्डिंग सीसी पर मिनट, दैट मीन्स सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो सेंटीमीटर क्यूब मीन्स वॉल्यूम रिलेटेड फॉर्मूला, इट इज वॉल्यूम रिलेटेड, ओके। सो लेट सेमी वर्टिकल एंगल equals to theta, okay. So tan theta equals to height by base, मतलब height by base, that means height कितना है 5 by base मतलब 10, ऐसा होता है ना फिगर, ठीक है। तो ये हाइट होगा, ये बेस होगा, 5 by 10, so that means tan theta equals to क्या मिला आपको, हाफ। tan theta क्या है, हाफ। अब क्वेश्चन में नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन dv by dt, देखो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया गया ना, वाटर इज पोरिंग इनटू इट, दैट मीन्स व्हाट, द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, water level is increasing, everything will be increased, okay. That means because the water quantity is increasing now with respect to the time, so dv by dt will be increased. So 3 by 2 plus 3 by 2 centimeter cube per minute. तो टाइम के रेस्पेक्ट में लेना है, दैट मीन्स ddt लिया गया हम, ठीक है। तो ये dv by dt 3 by 2 centimeter cube per minute given है। Now what we have to find the rate at which the water level is increasing. अच्छा, water level is increasing, that means what, ये तो ये इसको वाटर लेवल डेप्थ, उसको क्या ले लेते हैं, h ले लेते हैं और उसको r ले लेते हैं, है कि नहीं, ठीक है। लिख सकते हैं ना ऐसे। अच्छा, तो इसको एक नाम देते हैं, इसको o a b, है कि नहीं। एक काम करता हूं, उसको o डैश नाम दे देते हैं, ये b डैश, ओके। फॉर o डैश b डैश a फॉर दिस ट्राइंगल, वहां पर भी देखो ट्राइंगल तो एक ही है, एंगल भी सेम ही है, ट्राइंगल थोड़ा छोटा हो गया, वही है tan थीटा इक्वल्स टू हाइट बाय बेस, दैट मींस r बाय h, लिख सकते हैं ना, है कि नहीं। सो tan थीटा का वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखा था शायद हाफ, तो हाफ इक्वल्स टू r बाय h, एंगल तो सेम ही है ना, तो दैट मींस h इक्वल्स टू ट्वाइस r, h इक्वल्स टू क्या निकला, ट्वाइस r मिला। तो दैट मींस यहां पर h इक्वल्स टू ट्वाइस, नहीं काम करो, r इक्वल्स टू h बाई 2, r इक्वल्स टू h बाई 2, ठीक है। क्यों मैंने r का वैल्यू निकाला, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन जस्ट यू कैन सी water level is rising, you need to find water level at what rate this water level is increasing, that means what, water level is increasing means what, height increase हो रहा है। वाटर लेवल, किसी चीज का लेवल अगर इंक्रीज हो, दैट मीन्स क्या इंक्रीज हो रहा है, हाइट इंक्रीज नहीं हो रहा है क्या, हाइट इंक्रीज हो रहा है, हाइट इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स dh by dt needs to be found. So if you have any term without this h, that should be converted to the h term, okay. So here that's why r का वैल्यू हम लोगों ने h रिलेटेड निकाल के रखा है, जहां जहां पर r होगा वहां पर हम लोग h बाई 2 पुट कर देंगे, जिससे पूरा r रिलेटेड टर्म्स जितना सारा होगा वो सब h में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हम लोग dh बाई dt निकाल सकते हैं आराम से, है कि नहीं। सो नाउ अब शुरू कर दो। we know that v equals to, we know that ये कोनिकल शेप है, दैट मीन्स v 1/3 पाई r स्क्वायर h।
सो बोथ साइड अगर यहां पर देखो, अच्छा यहां पर v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, देखो आर मिला ना यहां पर, तो ये h स्क्वायर बाई 4 इंटू एच, इट मीन्स पाई बाई 12 इंटू एच क्यूब। अब बोथ साइड t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ये पाई बाई 12 और एच क्यूब मतलब 3h स्क्वायर डी एच बाई डी टी, है कि नहीं। क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में देखो, व्हेन द डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स व्हेन डेप्थ मतलब h इज 4, तो dv बाई dt, अच्छा dv बाई dt का तो आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/2, लिख लो पाई बाई 12 इंटू 3 इंटू एच स्क्वायर, दैट मीन्स 4 स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी बाई dt तो मुझे निकालना है, बस कर लो कैलकुलेशन। 3 कैंसिल, यहां पर ये 2 6, दैट मीन्स डी बाई डी टी इक्वल्स टू 6/16, 6/16 पाई, यहां पर 16 पाई और इधर 6 होगा, ओके। सो काटेंगे तो उसको 3/8 पाई, दैट मीन्स 3/8 पाई सेंटीमीटर पर मिनट। तो डी बाई डी, वाटर लेवल इज राइजिंग एट द रेट ऑफ 3/8 पाई सेंटीमीटर पर मिनट, ओके। मिनट तो है ना, हाँ पर मिनट। सो दिस इज द अनदर क्वेश्चन। Okay, then next question. A water tank has the slope of an inverted dry circular cone. A water tank has the slope. A water tank has the slope. A water tank has the slope. Water tank has the slope. Water tank has the slope of an inverted dry circular cone. A water tank has the slope of an inverted dry circular cone. Inverted right circular cone, right circular cone with its axis vertical, with its axis vertical, that means vertical axis के साथ, and vertex lowermost, and vertex lowermost मतलब नीचे की तरफ है, lowermost एकदम कॉर्नर में है, ठीक है, lowermost. Its semi-vertical angle is tan inverse 0.5. Its semi-vertical angle is tan inverse 0.5. Water is poured into it at a constant rate 5 meter cube per hour. Water poured into it at a constant rate 5 meter cube per hour. Okay, find the rate at which the level of the water rising. Find the rate at which water level is rising, water level is rising at any instant, at the instant when
depth is 4 centimeter. That means an inverted cone is there, okay, and water is being poured into it, okay, into this inverted cone as well, okay, and the semi-vertical angle is given. Water is poured into it with the constant rate 5 meter cube per minute. That means यहाँ पर पावर जो है क्यूब है, that means volume related question it is, okay, volume. So dV by dt is given. So water is being poured into it. That means if you pour some water, if you pour the more and more water into it, then I think this water level will be increased. So according to this water level is increased, I think the volume and surface area, whatever is related with this quantity of this water, that will be increased also. Okay. So volume हो, surface area हो, कुछ भी हो, height हो, कुछ भी हो, increase तो होगा, क्योंकि पानी तो यहाँ पर डाल रहे हो तुम, पानी निकल नहीं रहा है यहाँ पर, ड्रिपिंग आउट नहीं हो रहा है 5 मीटर के ऊपर. तो फाइंड द रेट एट व्हिच वाटर लेवल इज राइज, सेम चीज, वाटर लेवल इज राइजिंग, दैट मीन्स dH by dt निकालना है. क्वेश्चन सेम ही है, जस्ट थोड़ा यहाँ पर ट्विस्ट दिया गया है, यहाँ पर सेमी वर्टिकल एंगल थोड़ा अलग दिया गया है. अलग मतलब देखने में थोड़ा, लेट सेमी वर्टिकल एंगल इक्वल्स टू थीटा. सो थीटा इक्वल्स टू क्या दिया गया है, tan इनवर्स 0.5. दैट मीन्स tan थीटा इक्वल्स टू 0.5. दैट मीन्स हाफ. सो tan थीटा का वैल्यू क्या मिला, हाफ मिला. देखो लास्ट क्वेश्चन की तरह है नहीं, लास्ट क्वेश्चन में तो देखो एक ही तो बात है ना, tan थीटा इक्वल्स टू हाफ. ये तो लास्ट क्वेश्चन ही है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन dV by dt इक्वल्स टू, according to the question dV by dt equals to what, 5. बढ़ रहा है, that means +5 ही होगा. ठीक है. ये conical shape है, that means this volume formula will be used for the cone, right circular cone. So V is what, 1/3. अच्छा यहां पर एक डायरेक्ट कर लेते हैं, V की जगह यहां पर ddt of V means 1/3 pi r square h equals to 5 है नहीं. ठीक है. तो फिगर तो वही होगा, फिगर तो यहां पर वही है. ठीक है. यहां पर पानी ऐसा ऐसा है, तो ये है वाटर सरफेस, ये है r और ये है h. ओके. और ये है थीटा, सेमी वर्टिकल एंगल इज थीटा. तो यहां पर लिखो हियर tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा बोलो तो, here tan theta equals to, here tan theta equals to, here tan theta equals to r by h है ना, तो half equals to r by h. That means r equals to h by 2. Now देखो ddt of, इसको इक्वेशन नंबर 1 देख रखो, from 1 ddt of, देखो 1/3 pi r square means h square by 4 into h equals to 5. So 1/3 pi h cube by 4 equals to this. ddt है सब. ओके. ठीक है. So ddt of 1/3 pi, 1/3 मतलब 1/12 हो गया, और 3h स्क्वायर ddt काट दो, डिफरेंशिएशन कर लो, 3h स्क्वायर dh by dt इक्वल्स टू 5. दैट मीन्स 4. तो एट एनी इंस्टेंट डेप्थ इज व्हाट, 4 सेंटीमीटर. दैट मीन्स h इक्वल्स टू 4. सो जस्ट लिखो व्हेन h इक्वल्स टू 4, देन जस्ट बिठा दो h, सॉरी यहां पर क्या होगा, ये h स्क्वायर का जगह 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर पाई, 4 स्क्वायर पाई, 4 स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल्स टू, और dh by dt इक्वल्स टू 5. दैट मीन्स dh by dt आपको मिलेगा 20/16 पाई.
दैट मीन्स dh by dt का आंसर क्या मिलेगा 5/4 पाई मीटर पर क्या होगा, क्या दिया गया था यूनिट, मीटर पर आवर, मीटर पर आवर। ये है आपका वाटर लेवल इज राइजिंग एट द रेट ऑफ 5/4 पाई मीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल revenue received from a sale of X unit. Okay, just write the next question. The total revenue received from the sale of X unit. Total revenue received from a sale of X unit of a product the total revenue received is received from the sale of X unit of a product is given by a very simple question है, given by rx, मतलब रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, किससे, x यूनिट सेल करने से, 13x² प्लस 26x प्लस 15। ओके, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल्स टू 7। फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू when x equals to 7। मतलब यहां पर रेवेन्यू आ रहा है x यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट सेल करने के बाद, ठीक है। तो रेवेन्यू जो आ रहा है, ये रेवेन्यू का एक इक्वेशन दिया गया तुम्हें, ठीक है। यहां पर x का डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट आएगा, ठीक है। x तो यहां पर क्या है, क्वांटिटी है, प्रोडक्ट का कुछ यहां पर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो यहां पर तो x का एक्यूरेट वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं। For the different values of x, revenue will be different. Okay, so now you need to find the marginal cost, that is marginal revenue when x equals to 7. ये marginal, that means what? The difference, that means the rate of the revenue as well. Okay, that means with respect to the quantity of the product, how much the revenue is coming from this particular product. Okay, that should be found. That means what? Revenue यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है x क्वांटिटी है ना, x के रेस्पेक्ट में रेवेन्यू कितना आ रहा है, दैट मीन्स रेवेन्यू का चेंजेस निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू द क्वांटिटी। यही है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल मतलब ही है आपको रेट निकालना है, किसका रेट, रेवेन्यू यहाँ पर जो चेंज हो रहा है ना विथ रेस्पेक्ट टू, क्योंकि यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर क्वांटिटी है ना प्रोडक्ट का, तो x जितना चेंज होगा रेवेन्यू भी उतना ही चेंज होगा। तो यहां पर वही आपको निकालना है कि प्रोडक्ट का क्वांटिटी जितना चेंज हो रहा है तो कौन सा रेट होगा जिससे रेवेन्यू भी चेंज होगा, है कि नहीं। तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट का यहां पर क्वांटिटी बढ़ेगा तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली, ये तो नॉर्मल थिंग है। सो गिवन rx इक्वल्स टू 13x² प्लस 26x प्लस 15। सो dr बाई dx x के रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि रेवेन्यू तो प्रोडक्ट का क्वांटिटी है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। 13 इंटू x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 26। सो एट x इक्वल्स टू 7, दैट मीन्स dr बाई dx का वैल्यू आपको निकालना है जब क्वांटिटी x इक्वल्स टू 7 हो। 26 इंटू 7 प्लस दिस, दैट मीन्स प्लस 26, दैट मीन्स 208 यूनिट, सॉरी, ये तो रेवेन्यू का चेंजेस निकल रहा है नहीं। सो दैट मीन्स रेवेन्यू तो ये रुपीज आएगा, ₹208 पर यूनिट ऑफ एक्स। मतलब यहां पर रेवेन्यू का चेंजेस जो है
वो ₹208 दैट मीन्स 208 रुपीज करके चेंज हो रहा है पर क्वांटिटी पर। दैट मीन्स जितना क्वांटिटी बढ़ रहा है उतना ही रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, और रेवेन्यू किस रेट में बढ़ रहा है? 208। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप, sand is pouring from a pipe, sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. Sand is pouring from a pipe at the rate 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground. Falling sand forms a cone on the ground. Okay, on the ground, in such a way that the height of the cone is always, in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius, is always 1/6 of the radius, 1/6 of the radius. How fast the height of the sand increase? How fast the height of sand is increasing when h equals to 4 centimeter. That means, I don't know whether you have seen or not, just whenever this sand is being poured on the ground actually, then I think it will form a cone shape. Okay, this is the practical example that you can see. Practically you can see. तो इट मीन्स जितना तुम मिट्टी डालोगे वो मिट्टी जो गिरेगा ना ग्राउंड पर वो कोन शेप होके गिरेगा। तो जितना तुम मिट्टी डालते रहोगे उतना ही कोन शेप जो है वो बड़ा होता रहेगा। तो जितना कोन शेप बड़ा होता रहेगा उतना ही उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होता रहेगा। जितना वॉल्यूम ज्यादा होता रहेगा उतना ही हाइट ऑफ द कोन बढ़ता रहेगा ना। फिर बेस रेडियस भी बढ़ता रहेगा, बेस भी बढ़ता रहेगा। तो जितना तुम यहाँ पर मिट्टी डालोगे उतना ही कोन शेप जो है वो बड़ा होता रहेगा साइज में। तो साइज भी बड़ा होगा, दैट मीन्स वो क्या है, हाइट भी बढ़ेगा, बेस रेडियस भी बढ़ेगा, है क्या? तो दैट मीन्स हर कुछ यहाँ पर इंक्रीजिंग होगा। हाइट हो, रेडियस हो, सरफेस एरिया हो, वॉल्यूम हो, कुछ भी हो, वो सब इंक्रीजिंग रेट ही दिया जाएगा क्वेश्चन में ऑब्वियसली। तो यहाँ पर वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि देखो 12 सेंटीमीटर क्यूब की बने। लेट वॉल्यूम equals to V, radius equals to R, height equals to H. According to the question, dV by dt equals to 12 centimeter cube per second. And देखो यहाँ पर दिया गया height of the cone, that means H, is always 1/6 of the radius. That means h equals to 1/6 of the radius. So that means r equals to, that means यहाँ पर r equals to 6h ऐसे लिख सकते हैं, r equals to 6h। हम लोग को क्या निकालना है? अभी हम लोग को निकालना है कि यहाँ पर मैंने बोला था कि जितना तुम मिट्टी डालोगे उतना ही कोन शेप जो है वो बड़ा होता रहेगा साइज में। दैट मीन्स हाइट भी इंक्रीज होगा, है नहीं? शेप तो ऐसा होगा ना, ये हो सकता है शेप, ठीक है, ऐसा। तो जितना तुम डालोगे उतना ही तो बढ़ता रहेगा ना हाइट।
तो हाइट का इंक्रीजिंग रेट निकालना है तुम्हें, दैट मीन्स dh/dt निकालना है। सो लिखो हियर dB/dt कितना गिवन है, dB/dt इक्वल्स 12। सो दैट मीन्स ddt ऑफ v के जगह में क्या लिख सकते हैं, 1/3 पाई r²h इक्वल्स टू 12। सो दैट मीन्स 1/3 पाई तो बाहर निकाल दो और ddt ऑफ r² के जगह में 6h, दैट मीन्स 6h होल स्क्वायर इंटू h इक्वल्स टू 12। कैलकुलेशन करो अभी, ठीक है, कैलकुलेशन करो, निकल जाएगा। सो ddt ऑफ 36h³ इक्वल्स टू 12 इंटू 3/पाई। तो 36 इंटू 3h² इंटू dh/dt इक्वल्स टू 36/पाई। 36 कैंसिल, तो dh/dt क्या निकलेगा, क्या निकलेगा 1/3h², 1/3h²। अब लास्ट में देखो व्हेन h इक्वल्स टू 4 क्वेश्चन में दिया गया है, सो व्हेन h इक्वल्स टू 4 तो बिठा दो dh/dt निकल जाएगा। सो dh/dt h इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स 1/3 इंटू h², दैट मीन्स 4², दैट मीन्स 1/48। पाई कहा गया, पाई एक है ना, 1/3² पाई एक है यहाँ पर, ये पाई 48 पाई क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ये सेंट का जो हाइट है वो इंक्रीजिंग रेट में आएगा, और कितना रेट में इंक्रीज होगा, 41/48 पाई मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड रेट में इंक्रीज होता रहेगा। So these are the questions and these are the solutions from the rate of measures chapter, application of differentiation. So I think 3 or 4 lectures were given from this chapter, and I think all the questions from NCERT and rd.sharma, rs.agarwal, whatever the book it is, all the type questions are solved. Okay, every questions were solved. So just you can see the JEE main advanced classes also. In that classes the various extra questions are being solved. Just you can see if any questions are left in this regular classes, that you can see that type of questions from the JEE main advanced classes. Okay, so I think if you have any kind of queries, if you have any kind of doubts, that you can ask me in the Telegram group or in the comment section. Okay, so thank you very much for joining my classes. If you like my videos, if you like my lectures, then subscribe, like and share my channel, so that I can make this video, I can prepare this video in the nearest future for your better conveniences, okay, from my side. Okay, so thank you very much for joining my classes, and thank you very much for your support. So bye, मिलते हैं next video में. Till then, stay safe and stay healthy, and bye. जय हिंद.